Hello everyone, welcome on the platform of Unacademy. Let's crack CBSE. How are you all? Good evening to you. So, my dear students, today in our we are going to have the previous year question, not the previous, but the old. Okay, so start with today's lecture. Before I start, one introduction that I have done MS biology. I have around 2 years of degree. What about my introduction? बात करते हैं Unacademy के platform that on the Unacademy. And subscription features I can say that one is the iconic and the other is the plus subscription. Okay, so the studies that you are going to get of Unacademy on both the subscriptions they are completely, but the thing is that the features, the benefits, they are quite. Let's talk about the iconic. So first in the iconic you are going to means what then you are live doubt solving. Live doubt solving. That is, parents can also get connected to us because your parents are concerned and you are going to have all the benefits. And what are the plus benefits? We will see. बात करते हैं plus के benefits. In the plus benefits, first of all, you are going to have the daily live lectures as you are having it now. Okay, then a live test and the quizzes will be held for you, and by giving the live test and the quizzes, your performance that how much you have prepared and how much you prepare. Then structured course. This structured course will help prepare for your examination because each and every human being they need perfect in order to go. Okay. So here that guidance is provided by Academy and they are unlimited access. All the courses are available from more than 30 competitive exams. All the competitive exams you are knowing or courses are available on this platform. You can see that this is a huge platform. You can reach up to your goal. Okay. So what we will get that we have already the live classes on Academy platform. This okay, you all know very well. Because I know that you have downloaded the Unacademy app Play Store. Okay, and you have been prepared with the top and all the top educators you have prepare with them, learn with them, have their knowledge, very great opportunity. Okay, and comprehensive. You can download the Unacademy application from Play Store. Okay, make your account, and we are also Telegram link is not visible over here. Maybe due to reason. Don't worry. You can see Telegram link in the others educators or in my lectures. Okay. And even my Telegram group is also there, and that Telegram group name is Divya Gupta's course. Okay, so you can find over there. So you can see that there are two different subscriptions. The iconic. Okay, you can see over here for the plus because first of all I will talk to about because you are having some preparations, right? You can see that for this once you have to pay rupees 10. So you don't have to pay rupees 10. Just pay rupees 9,000. It means what you are going to have percent is for 10%, and for that 10% amount you have to make use of this referral code that is use. जैसे आप ये वाला कोड यूज करते मिल जाता आपको सिर्फ 9,000 just small amount on all these here on this platform. Okay, so my dear students, learn and have this subscription of Unacademy itself so that you can learn and will be benefited with the different features of the Unacademy. ये बात थी हमारे plus subscription. If you want to have the iconic, so you can see iconic subscription in 6 months you have to pay rupees 7. So again you are going to have that 10% make use of this referral code that is the as soon as you will make use of this
again have 10%. Okay, you have to charge rupees months. This month in this amount only. Okay, isn't it look better? Okay, so dear students, please make use of this reference and subscription on Unacademy. Personal start with our today's topic. We are discussing the old question. This is question paper. Different sets are there that we are going to have. Okay, 2018 का set 3 वाला paper we are this. Okay. So now let's start with it. And my dear students, the content is not equal to you. The old question, put that as rotate your skin, so it will be little clear to you. Okay, if not that, zoom over here right now, but it I will make sure that it will be visible to you. Okay, it first question: how do cytokines provide innate immunity in humans? Cytokine barrier immunity वाला चीज़ के अंदर हमने what are cytokines produce interferon use करता है from और वो interferon है जो it provides immunity. Okay, so have to the thing like is provides us prevent us from. Then you also have to learn the cytokine. Okay, next question. I did well purpose served by deoxyribose riboside triphosphate in polymerization. Okay, तुम्हारा जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या काम करता है? कौन सी दो? First, it do the work of substrate. Okay, it acts as a substrate, and another it provides us the energy. Okay, next, write the names of the following: A15 MYA primate that was applied to MYA primate. MYA, we all know that means the billions of years. Okay, billions years ago. MYA, billion years ago कौन थे? Million year ago there was the we can say Australopithecus, or you can also Homo habilis. You can write any. Okay. And the next question: mention the chemical pro insulin and okay. तो जब हमारी पहले प्रो इंसुलिन तो उसके अंदर चेंजेस होते हैं इंसुलिन क्या चेंजेस होते हैं? रिमूवल ऑफ बस इंसुलिन ए एंड बी. प्रो इंसुलिन में सी भी होती है. प्रो इंसुलिन रिमूव कर. नेक्स्ट क्वेश्चन: name two diseases whose controlled by the eradication Aedes mosquito. अब यहाँ पे ये लिखना है कि Aedes mosquito की वजह से कौन सी डिजीज होती है. Okay, हमें डिजीज पता होगी तो we can get prevented with them. Okay, so Aedes mosquito has in the spread of it will be very easy. कोई भी दो डिजीज dengue and chikungunya you people are knowing very well, right? And even Zika virus that also you know very well. So right of you can write T and P too, but it can can work as a backup plan. Okay. We are on the second B. Previous 1 to 5 questions were A. Okay, that was the 1 mark. I forgot it to. And over here now the okay. First of all, how did a certain group called Friends of Marsh, California, USA, help to improve water of the marshland
using integrated waste water steps। तो हमें यहाँ पे बताना सही मार्श लेना make you think first water is treated by the glacier, water flow in mash. The water in mashes is seeded with appropriate plants and the algae, fungi, bacteria, which help neutralize the pollutant and absorb the pollutant and because that is a microorganism. This is the yeah, very also okay. So you can see over here that in the water the people have put the plants and it help them to nutrition and removal of pollutant. Okay, next question number 7. Your advice is to improve the nitrogen content of the soil is to use cultivation minerals additional। आप लोगों के क्वेश्चन बोला गया for you your advice to improve the nitrogen content in order to cultivate the non-leguminous crops। Okay, first is recommend so first your advice is to recommend two microbes that can enrich। अब यहाँ पे ऐसा है आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आप एक काम यहाँ की सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट को चेंज कर दो या बढ़ा दो तो आपके नॉन लिग्यूमिनस ग्रो हो सकते। तो आपको एक चीज़ ये बतानी है कि विच टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स you are going to recommend। Which two microorganisms you are going to recommend? Those who are having the capacity to fix the nitrogen। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी 9, 10, 11 पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। देख सकते हो एस्परजिलस सॉरी एजोटोस्पाइरिलियम एजोटोबैक्टर any of the two if you will write there also will work। Okay. Then why do leguminous crops do? अब यहाँ पे क्या नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप तो ओरिजिनली बात हुई है। दिस इज दिस रिया राजपूत। इट इज रिया राजपूत। So we all know that for the fixation of air requires the rhizobium and we will see the rhizobium in the leguminous plants। they will be seen like you will see like such legume root nodules but नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमें ऐसा कुछ रूट्स के अंदर राइजोबियम होता ही नहीं है। और क्या पूछा है जो लेग्यूमिनस leguminous as the rhizobium in their root nodules। Okay, next question। You have obtained a highly yielded high yielding variety of tomato। Now name and explain the procedure to ensure retention of desired characteristic repeated in large population for future जनरेशन ऑफ क्रॉप। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आप लोगों को एक हाईली वेराइटी मिल गया दैट इज। अब आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपको रिटेंड करके रखना है तो प्रिजर्व करके हाउ यू आर गोइंग टू। so now you can see tissue culture microengineering culture की characteristics and any plant taken out and grow। आप कोई भी प्लांट लेके ग्रो कर सकते हो एंड यू कैन ग्रो वेल इन दी लेबोरेटरी सो दैट उसको और कोई कंटामिनेशन नहीं मिलेगा और कोई
reserved drawing. Then you have to keep such and या उस कंटेंट बॉक्स के ऊपर कोई भी टाइप क्वेश्चन ना. ओके, एंड इन स्पेशल वीडियो दैट सेशन सो दैट उन क्वेश्चन जो होते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग में यू कैन मैच. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. Name the source plant of heroin drug. How it is obtained from heroin drug. इसमें से मिलता है वो हमें प्लांट करना और हमें कैसे मिलता है वो बताना. राइट द इफेक्ट्स ऑफ द हेरोइन बट क्या कंपाउंड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेरोइन इज अ कॉमन नेम. एक्चुअली प्लांट है वो है पेपरबस सोमनिफेरस. Name of the plant is paper somniferous plant. Okay. And how we obtain the heroin by the latex of the latex क्या होता है जो white कलर का होता है ब्रेक करते हैं मिल्क निकलता है जो होता है latex. तो हमें and how does it affect is the depression. Causes the depression, it means, and we all know that in the depression the body functions slow down. Okay, now 10. The help of the algebraic equation. How did Hardy-Weinberg equation? So we are going to skip this question because this question is from the chapter number 7, that is evolution. And evolution not big or self. That's why we are going to skip this. But do remember that हर बार एग्जाम एक हार्डी पेन क्वेश्चन. Okay, we are on the second. Okay, here the question will be of 3 questions, 11 to 15. There are 10 questions which are 23 is 30 marks activities. So important. Right? Now, the question number 11. Differentiate between the analogous and the homologous structure. This question is also from your evolution, right? Is also from your evolution chapter. This question, yes, this is important. Question number 12. How has the of agrobacterium as a vector helped in controlling the Melanodyne Incodini infections in the tobacco plant? Explain the correct sequence. So, how we are using agrobacterium as a vector? हमें यहाँ पे ये लिखना है. मतलब हमें यहाँ पे अगर आपको ये सारे नाम नहीं भी पता हो तो डोंट वरी. आपको आपके CBSE का बोर्ड है, राइट? CBSE में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है. ये नहीं पूछा जाता कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज दी वेक्टर. वो तो आपको पता चल जाता है. हर एक क्वेश्चन के टाइप को ट्विस्ट कर दिया जाता है. तो द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्विस्टिंग. क्योंकि पेपर में मतलब मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि 3-4% चीज़ें 3-4% वर्ड्स ऐसे आते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे. और वो जब वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो पढ़ा ही नहीं पूरे. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. उस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस किसको दिया है? वेक्टर. या इस डिजीज़ के नाम को दिया है? वेक्टर को दिया है. हमने ऐसे डिजीज़ नहीं पढ़ी पर हमने वेक्टर ज़रूर पढ़ा है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. जब तक आपकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी till that time you cannot write your paper very easily. Okay, so for that practice you have, for that thing you have to practice more and more papers before your examinations, and that's my advice to you. Okay, so how we can use agrobacterium as a vector, that we have to mention in this answer. Okay,
Now we will see that how we can use it. First is using agrobacterium vector nematode. Specific genes are introduced into the, तो सपोज ये एक प्लांट है, मुझे ये वाला जीन्स पसंद और ये मेरा वेक्टर है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने वेक्टर में से क्या किया, एक पोर्शन काट दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मुझे सिलेक्टेड पोर्शन था इंटरेस्ट का, उस पोर्शन को इंसर्ट करवा दूंगी, तो एक नया डीएनए बन जाएगा। इसके अंदर का तो डीएनए कंटेंट है ही, साथ में उसका वो डीएनए कंटेंट आएगा जो मेरे इंटरेस्ट इज ऑफ माई इंटरेस्ट। आई वॉन्ट दैट टाइप ऑफ be more and more transferred. Okay, so that is, it is introduced in first plant, then sense and antisense of the mRNA produced, इस टाइप का डीएनए बन, sense and double stranded RNA, डबल स्ट्रैंडेड इनिशिएट्स RNAi, और फिर क्या हो जाएगा कि वहाँ पे फिर prevents translation of mRNA slicing and nematodes, parasites will not be survived। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नया टाइप का RNA बन, ठीक है, और नया टाइप का RNA हो गया तो उसके अंदर नई टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स, और नई टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। इट विल नॉट अलाउ दी पैरासाइट्स टू सर्वाइव ऑन दैट, और ये जो नाम, ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं हर एक जनरेशन बहुत ज़्यादा एडवांस, क्यों इतना, बिकॉज उनका जो डीएनए है वो काफ़ी हद तक आई कैन से एडवांस डीएनए हो गया है, और वो डीएनए ऐसा हो गया जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो चीज़ें जैसे जैसे चेंज होती जाती, डेट आता रहता, ठीक है, क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो कौन नहीं चाहता कि उनका मोबाइल अपडेटेड हो। इसी तरीके से फॉर्म, ओके, एंड हमारा अपडेटेड फॉर्म तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिजम्स का अपडेटेड फॉर्म इस तरीके से कुछ प्रोड्यूस हो, ओके। Oh my god, so this, you know, it will be not that much clear to you. No problem, I will read it for you. Question number 13. India has better ecosystem diversity than the norm. Do you agree with this statement? Give reasons in support of your answer. ऐसा क्यों आपको लगता है कि इंडिया के ecosystem ज़्यादा है? Yes, reasons है, इंडिया के पास लेस, इंडिया का जो एरिया है इट इज while Norway it is more seasonal, okay, less content, less predictable, और इंडिया तो हम बहुत predictable बोल सकते हैं, या क्या समर इन सबके सीजन जो होते हैं फिक्स होते हैं, तो बहुत चेंजेस, बट देन ऑल्सो to grow anything, to develop the ecosystem, one can think about seasonal changes, okay, then promote niches specification, अपने niches का specific, and Norway temperate region, it does not provide the perfect niches. Then the next question, species diversity increases as we move towards the equator, okay, species diversity increase as we move towards the equator, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है, while here this species get decrease. More number of species India, and less number of species exist over Norway and temperate. Okay. B number of question,
Write the difference between genetic biodiversity and biodiversity. Biological. You have to mention diversity. The type of biodiversity. So genetic diversity variation over its kingdom. Tissue diversity. Optional question of this 13 maybe. So explain the effect of the characteristics of the river when urban sewage is large in. यहाँ पे क्या दिखाना? Disadvantages. Urban sewage will be charged into the river. So we have to mention it. Like there will be increase in the BOD. सबसे पहले ये काम तो होगा ही होगा. Have to mention it. And organic level का matter बहुत बढ़ जाएगा. ओके ऑर्गेनिक लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी इट मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द बीओडी एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी द फिश मोर्टेलिटी बिकॉज द फिशेज विल नॉट हैव इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन okay because more and more microorganisms will be floating on here and because of more and more microorganisms the oxygen cannot reach properly up to the cell bloom color change fall order and increased toxicity. The disadvantages I can say the effects if we will discharge wastewater into the likely without treatment. Okay. So dear students, if you are having doubt or any query, you can make use of your comment. You can clear all your doubts. Okay? Now, the question number 14. Explain the mechanism of sex determination in birds. Always remember very birds. Birds, the males are homozygous and the males are homozygous. Because this is the first step on which you people can make. Okay, so remember it. How does it differ from that of human beings? वो बताना है. Birds में क्या हमने देखा females are heterozygous and males are humans में क्या होता है males are heterozygous and females are this is how it differs and we have to show the mechanism. Okay, so this sign is for female is ZW and ZZ that is the male. Okay, we'll see that how combination works. So ZW it will this is the female. Okay, and we go to gametes. Gametes में क्या आएगा Z and W. Okay? और मेल है because it is a homozygous. Gametes के सिर्फ Z आएगा. Now there will be the crossing over. इस टाइप of crossing over ऐसे confusing होता है. For me, एक gametes में Z percent females with percent males with 1:1 ratio. Okay, and how it does differ from the discussion. Okay. Explain the outbreeding, breeding, and crossbreeding practice in the animal. Outbreeding, outcrossing, the crossbreeding practice in the animal husbandry. So it's a very critical questions because यहाँ पे सबसे ज़्यादा confusion create होता है और ये आंसर लिखते वक्त अगर एक भी वर्ड इधर उधर हो गया so people are going
But outbreeding means breeding to unrelated animal. Means one is the mouse and other is lizard. They are the unrelated animal. Okay, so which may be between the individual of same breed or between the individuals of different. Here you can same breed or here you can different. Example, mouse and the lizard. They are the different species. Outbreeding means what? पूरा complete out हो गया है out of the state, and out of the state कब होगा जब ब्रीडिंग जो ठीक है वो एक अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा. आउट क्रॉसिंग a kind of outbreeding. It is a type of outbreeding, mating of animals within the same breed but having no common ancestor due to sexual generation. तो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, क्योंकि ब्रीडिंग सेम है, हियर वी आर नॉट चेंजिंग दी स्पीशीज, ब्रीडिंग सेम रख रहे हैं, ब्रीड्स सेम रख रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एनी कॉमन एंसेस्टर. वो कुछ भी मतलब उन दोनों के अंदर कुछ 4 से 6 जनरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए. ब्रीडिंग हम क्या बोलेंगे, इट एज अ क्रॉस ब्रीडिंग, सॉरी आउट ब्रीडिंग. नाउ द क्रॉस ब्रीडिंग, another type of outbreeding. Superior males of one breed are mated with the superior females of the other breed. यहाँ पे क्या होता है, एक breed का मेल और दूसरी breed का फीमेल, they are going to have the fertilization. Okay, तो definitions पढ़ते वक्त ऐसा रखते, it is very difficult to learn the small difference, but yes, it is a very important, and this question was also asked in. Okay, to make sure that you are going through such type of questions a lot, and जब भी आप पुराने previous question पढ़ो तो उसके अंदर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आपको पता चल जाए तो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है. एंड ऐसा ही होता है कि भाई एक कोई क्वेश्चन है ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर A question. Organic farmers prefer biological control of disease. Okay, and best to use of chemicals of the purpose. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करते हैं डिजीज के लिए, एंड बेस्ट टू द यूज ऑफ केमिकल फॉर द सेम पर्पस. तब वो लोग बायोलॉजिकल एजेंट भी यूज और केमिकल्स भी यूज कर रहे हैं फॉर द सेम पर्पस. Another question that the bacteria, a fungus and an insect agent. तो ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर या तो कर रही थी at that moment. In those days also I have told you that this is a very important question. Okay, how important is, you can get it in, it is in the question paper number, question paper of 2018 and set 3. Okay, how the biological agents are, so you can see over here. It reduces the dependence on toxic chemicals. Okay. We don't have to, if we are using the biological agent, we don't have to depend on the toxic. तो ज़रूरी नहीं कि अगर टॉक्सिक के लिए हार्मफुल नहीं हो, in some or the other ways the chemicals are injurious to our health, harmful for our health. Then another reason that it protects our whole system and environment, but obviously we have to keep this thing in the mind at the first priority, that we have to protect our ecosystem and environment. Then these biological agents, just generally in most of the cases it attacks on the targeted organism. Okay, non targeted organism इन लोगों का कुछ, then these chemicals being non biodegradable may pollute the environment permanently. अगर if we will use chemicals not okay more than the level, then they are going to be very hazardous to the environment. Why it is going to be very hazardous? Because most of the chemicals are non biodegradable.
Okay, or non-biodegradable we will stay in the earth moment only, great नहीं होंगे तो cause if I can say it is going to cause many damage to the earth also. Okay, and these chemicals are being non-biodegradable may cause biomagnification. Now, do people know about biomagnification? Biomagnification में क्या होता है? Biomagnification के बारे में I'm sure that you have learned in the 9th or the 10th. Biomagnification बस एक बिकॉज हम लोग भी जैसे प्लांट्स या आदि वेजिटेरियंस वेजिटेरियंस क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। अब प्लांट्स को पानी वगैरह हम देते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल ऑयल जो लेते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल जब कोई भी केमिकल बढ़ जाता है तो उसका अमाउंट बढ़ता जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन ऑर्गेनिजम्स का हमें एग्जांपल्स का नाम लिखना है। तो फर्स्ट इज द बैक्टीरियम। बैक्टीरियम नेम्स इज बैसिलस thuringiensis बोलते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट organism biological point of view. Okay, then fungus is the trichoderma and insects are the ladybird, dragon, the other insects also working as a fire control agents. Okay, now the question number 17. How has the development of bioreactor helped in technology? So I can say that bioreactor container type prevent they are useful in preparing any sort of item in the huge amount. So that are how the bioreactors, and it is a very important part when we see the biotechnology point of view. How that we will see name the most commonly used bioreactor. You can see that in the 3 mark question it is a big question. Okay, and it's very important to pay attention. Large biomass or large volume of the culture can in the air yield of this desired specific concentration. हम लोग क्या करते हैं तो हम थोड़ा नहीं बनाते, वी आर रेडी वापस क्या करते हैं we take the full big vessel and in that vessel we prepare the food item so that each and everything will be will be having its consistency. Okay, in the same way biological because there are available like most commonly the curd. Okay, कर्ड जो बाजार में मिलता है तो कर्ड ऐसे नहीं है कि एक एक बर्तन में जमा है, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन द होल बायोरिएक्टर। ओके, ताकि उन लोगों को पूरा का पूरा जो कर्ड है उसको इक्वल टाइप की कंडीशन रहेगी तो जो पूरा कर्ड प्रिपेयर होगा इक्वल टेस्ट होगा, इक्वल न्यूट्रिशन होगी, इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन द बायोरिएक्टर वी कैन प्रिपेयर द our desired food product into the large biomass, large volume. Then steering type is the most common. Because a steering type means what? Mixing reactor. The steerers available help in the mixing. Okay. Agitator facilitate oxygen available. तो जितना ज़्यादा हम मिक्सिंग करते जाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर बढ़ती जाएगी। नॉर्मली काफ़ी फूड आइटम जो हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं उसको हम मिक्सिंग करते जाते हैं कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली मिक्सिंग करने से क्या होता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेंज होता है। सारे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन अलग अलग चाहिए। वी कैन ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 18 boys tell me that what
इजी नहीं आ रही। Hello students, now my voice is clear to you or not? No. Here on this question, yes, now the question number 18. Okay, thank you so much for letting me know. Question number 18. Explain the role of the following with the help of an example, each in the recombinant DNA technology. Restriction enzyme and plasmid का रोल लिखना है. Okay. Restriction enzyme क्या काम करता है? It helps for the DNA at the particular strand. Okay. And plasmid क्या काम करता है? It helps carry the DNA from one organism to another organism, or to carry the desired DNA from one organism to another organism, I can say. So restriction enzyme, it recognizes the specific of the base pair, that is palindrome, cuts the DNA. सबसे पहले क्या काम करता है हमारा एक स्पेसिफिक को recognize करता है एंड इट कट्स एट दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. जब तक उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं आएगी, पैलिंड्रोम सीक्वेंस नहीं आएगी, टिल देन इट कैन नॉट कट. और उसकी जो कटिंग सीक्वेंस होती है वो हर एक ऑर्गेनिज्म सेम होती है, चाहे वो किसी एनिमल का ऑर्गेनिज्म हो, बर्ड का ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी जीन क्यों ना हो. ठीक है. Then it plasmid, it acts as a vector. Okay, and why it acts as a vector? Because it clones the desired gene. Okay, वो एक जो desired gene cloning करता है, desired gene merge होके clones and it carry the gene organism to another organism. Like PBR 330. Okay, plasmid of. Then question number 19. Differentiate between parthenocarpy and parthenogenesis. Give an example of each. So over here we have to difference between the carpy and parthenogenesis. So parthenocarpy clear ma'am, लेकिन बीच अटक रही बीच अटक रही है. So maybe there is some network issue, that's why voice is not clear. Because yes, for last 2 days network is not properly. So in the parthenocarpy you can see that there are fruit. Okay, so parthenocarpy, wherever you will hear this word carpy, it means it is related to the fruit, and genesis means what? It is related to the organism. Okay, and the common examples are like banana, grapes, or any other. Okay, you can write any other examples related to the fruits. And in parthenogenesis, the best example is the honeybee. It is the creation of drones without fertilizer. Honeybees is the best example. Okay, then the question number 20. Here medically it is advised to all the young mothers that the breastfeeding is the best for the newborn babies. Do you agree? And what is the reason behind that? Okay, and this is a very common, most important type of a question, I can say that yes, it is very beneficial and it is very essential also. Why? Because that milk is known as colostrum. Okay, and this colostrum is completely rich in the calcium, food, and lactose, and most importantly it provides the antibody which we call it as IgA. Okay, IgA type of antibody is being provided by this colostrum, that is the initial type of a milk, and this helps to provide the nutrition, and even it helps to I can say to prevent the newborn baby from any sort of
organism, any sort of disease. Okay, now the next question, number 21. Draw a diagram of mature human from explain the cholesterol. I'm spelling is wrong. Yes, because maybe I'm writing with my this pen, and I'm not very at all comfortable with this pen, so that's why. Sorry for that, and thank you for letting me know. Okay, cholesterol. Now is it correct? These are quite smart nowadays, right? What have you said? Enemy, anti, and eat. Okay, it happens with the human being. Thank you for being cooperating with me. The thing is that I'm not at my actual working place, so that's why I'm comfortable, and because of that, such types of question number 21. Here we have to for the structure of male human sperm. We have to for its three part. We all know that it looks like that, and upper top cap portion is the acrosome. Then comes the nucleus. It all comes body part. Then in the middle piece there is a mitochondria, and this mitochondria is going to provide to will provide the energy. Okay, and then at the end there will be the tail. Okay, that are the three main labelings, and plasma membrane is always there. Okay, and we have to write their functions, और तो कोई भी तीन लेबलिंग आपको करने के बाद उन तीन कोई किसी फंक्शन आप लिख सकते हैं. Plasma membrane we all know it does the work of envelope acrosome. It is filled with an enzyme, और वो एंजाइम जनरली लाइटिक एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, लाइसिस करने वाले एंजाइम्स होते हैं जिनको लाइटिक एंजाइम्स कहते हैं. ओके, मैम फिर से जैसे टीवी पे सिग्नल नहीं है. I can understand NTA that you are facing this problem. The thing is that I am not at my original working place, and there is not that much perfect network. Okay, that's why you people are facing that. No problem. Just आपको क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, ठीक है? इन क्वेश्चन हो जाओ. Then also doubt or query, I will clear it out. Okay, later. Okay. So thank you for cooperating with me right now. Okay. Such type of I get very, yes, I am very happy that such type of students, that is cooperating students, are still there with us, teachers, with the educators, right? Thank you. Please continue so much. Just wait a second. Okay, fine. So acrosome, it is filled with the lactic enzymes, and these lactic enzymes has lysis. Mitochondria, it is the energy source. Middle piece, it is full of, it needs a full of energy. Okay, then tail, movement of the sperm, and nucleus contain the hormone material. Most important. Hello Sunil, namaste. How are you? Question number 22. Find VNTR and describe its role in the DNA fingerprinting. This slide will be sorry. VNTR stands for the variable number of random repeats. Okay, एक ही एक DNA का बहुत सारे जो repeats हो जाएंगे, that is what stands for the VNTR. Okay, and we have to its application. Okay, we have to mention the applications of DNA fingerprinting technique. My dear students, I know it is not that much clear.
kindly rotate the screen if you have not yet rotated, so that it will be clear to you. Okay, image is clear, but okay, it is VNTR, it is used as a probe. Okay, high degree polymerization. एंड ये फिंगरप्रिंटिंग, ये फिंगरप्रिंटिंग वाला जो मतलब फिंगरप्रिंटिंग वाला टेस्ट फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं, इट इज़ बिंग डेवलप्ड, इट इज़ एट द highest level nowadays because many students are opting the this forensic science for their future. Okay, and yes, it is a lot. Okay, पूरा का पूरा forensic science और use. Now the second, that is section D. Okay, and this section D, that question number 23 will be of 4 marks. Okay? So it will be the hot type of question, or I can the thinking type of a question. Looking at the deteriorating air quality, because air pollution in many cities of the country, the citizens are very much worried and concerned about their health. Doctors have declared the health emergency in the cities where the air quality is severely poor. मेंशन इन दी 2 मेजर कॉजेज, मतलब क्या है कि भाई सिटीज़ के अंदर एयर पोल्यूशन, लोगों के अंदर बीमारियाँ हैं वो बढ़ती जा रही है. तो मैम पैटर्न चेंज हो गया है इस बार. क्या है, अभी तक पैटर्न के बारे में कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं है परफेक्टली. ठीक है, इवन आप लोगों की एग्जाम्स की डेट भी अभी तक परफेक्टली डिक्लेयर नहीं हुई है. तो वी विल नॉट थिंक अबाउट इट. ठीक है, हम लोग जिस हिसाब से प्रिपरेशन करते हुए आए हैं वो हम प्रिपरेशन अभी भी करेंगे. ठीक है, एक और चीज़ है कि भाई पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, इट डजेंट मैटर. प्रॉब्लम क्या आता है कि हम पैटर्न चेंज होने की वजह से, आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमारे क्या काम आएंगे. बच्चा बाड़ी पेपर चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए, फिर उसका जो कंटेंट है वो चेंज तो नहीं. तो आप क्वेश्चन चाहे ऐसे पकड़ो, कान आपके चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ने तो भाई एग्जाम तो देनी ही है. ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है. ठीक है, क्लियर मैम. ओके, so what is your actual name? NTA NAT, NTA NEET, what is your actual name? बिकॉज ये NTA NEET बोलने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है. सुनील माले, वेर आर यू? मैम रोहित. ओके, सो रोहित, फ्रॉम वेयर आर यू रोहित? आई थिंक यू हैव ज्वाइंड माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपने फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ज्वाइन करी और आपको कई बार वही मेरी आवाज़. सॉरी फॉर दैट अगेन. फ्रॉम वेयर आर यू रोहित? Yes, ma'am. Yes, because I remember my maximum number of students, 99% of students I remember that who is the old student and who is the new student. Okay, I am from Punjab. Okay, Punjab. So far. So how is the weather over there? Is it cold or is it okay? Okay, I think it will be cold in Punjab also because it is very much near to the northern part, that is Jammu Kashmir. All that. Cold, ma'am. Yes. और जम्मू कश्मीर कितने पास में है ना, उनको पढ़ना ही है. ओके, so we were on the question number 23, that we have to mention any 2 major causes of air pollution, right? Any 2 harmful effects उनके बारे में लिखने हैं, and as a school student how you are going to create an awareness, इस बारे में लिखना है. So it's a very very easy peasy type. मैम आप कहाँ से हो? I am from गुजरात. ओके, जय जय गरवी गुजरात. I am from गुजरात. ओके, तो इट्स अ वेरी वेरी इजी पीजी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. बिकॉज क्वेश्चन देख के मुझे लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, क्या होगा इसके. बट अरे बाप रे करने वाली बात ही नहीं होती, क्वेश्चन पढ़ के देख लो, पानी जैसा क्वेश्चन निकलता है. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन दी हॉट्स एंड द क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज बच्चे जो है वो समझना ही नहीं चाहते क्वेश्चन.
ठीक है, तो समझना ही नहीं चाहते तो बच्चे एग्जाम कैसे लिखेंगे? बच्चा पढ़ी जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना उसका इजी आंसर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो द रीज़न बिहाइंड दी वेरियस एयर पोल्यूशंस लाइक व्हीकल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, बर्निंग, मैम ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है। यस आई नो बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट वंस अपॉन अ टाइम लाइक यू पीपल, है ना? तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के इवन एमसीक्यू के अंदर भी ऐसे चार बड़े बड़े फुल फुल लाइन के ऑप्शंस आ जाते हैं ना, पहले एमसीक्यू है फिर भी ऐसा लगता है अरे यार इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड करो, पहले एक ही वर्ड वाले क्वेश्चन देखो, है ना? होता ही है, सबके साथ होता है, बिकॉज दिस इज द ह्यूमन मेंटालिटी। थोड़ा बहुत मेरी एडवाइस के साथ अपनी मेंटालिटी चेंज कर दोगे, इट बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, so by the way Rohit, are you the plus student or you have joined the Unacademy for the first time? Have you taken the subscription of Unacademy or you are on the Unacademy's platform for the very first time? So answer of question number B, that is reduce the plant growth. What is the reason behind है ना, वही था ना क्वेश्चन। So I'm thinking to take. Yes, no ma'am, I'm not a plus, but I'm thinking to take. Yes, of course you should take the plus subscription because plus का subscription it is going to be very very beneficial for you because आपको पता है 6 मंथ्स ही रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, है ना? तो 6 मंथ्स ही रहे तो 6 मंथ्स के लिए अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, एक तो सबसे पहली बात तो ये बहुत रिजनेबल चार्जेस में आपके अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके, और इतने ही रिजनेबल चार्जेस में अगर आपको अपने घर बैठ के ही पढ़ाई हो रही है वो भी सारे सब्जेक्ट्स, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये वाला ना रेफरल कोड यूज़ करना है, दैट इज़ DJ007। जैसे आप ये वाला रेफरल कोड यूज़ करोगे आपको उसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द सोचो, ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट मत करो, सोचो भी मत, और जल्द से जल्द इस चीज़ को अमल में ले आओ एंड हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी बाय मेकिंग द यूज ऑफ द कोड दैट इज DJ007। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज दिस कोड इटसेल्फ। एंड माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ है कि अनअकैडमी के ऊपर पहले फ्री लाइव क्लासेस कंप्लीट की थी, ठीक है, और अब फ्री लाइव क्लासेस में आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा सो दैट यू कैन हैव द एक्सेस टू द फ्री लाइव क्लासेस। यू कैन गो थ्रू दी फ्री लाइव क्लासेस, उसमें आपको मना ही नहीं है, बट आपको वो फ्री लाइव क्लासेस के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको एक्सेस मिल जाए उन वीडियोस के लिए। तो यू कैन गेट मी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी एंड द लिंक इज़ ऑलरेडी देयर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इवन यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन मेक यूज ऑफ इट। ओके श्योर मैम, आई विल consult with my parents and I noted your code DD007। Thank you so much, Rohit, and consult with your parents as soon as possible, my dear Rohit. Don't waste your time, even I would like to say not even for a single day also। okay, एक दिन के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो टीचर्स कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, है ना? तो वही चीज़ हम भी आपको बुरा नहीं चाहते हैं ताकि आप लंबे टाइम तक अपने घर बैठ के अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, कंसल्ट विद योर पेरेंट्स वेरी वेरी सून एंड मेक यूज ऑफ दिस कोड। मेक श्योर, कोशिश करो कि भाई ये मंथ एंड होने मतलब 29 तो हो गई, 30 आजकल के अंदर ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, चलो, तो हम थे, कहाँ थे हम? तो acid rain are the different premature death of the plant, respiratory problems होती हैं, then what we can do in order to increase the plant। और मैम आपका न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? बच्चा रोहित, अभी तक मेरे न्यू बैच के बारे में मैं आपको कुछ भी एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकती हूँ, बट मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ कि बैचेस का वेट मत करना। ठीक है, अगर आप बैचेस का वेट करोगे तो बैचेस तो भाई सिलेबस के हिसाब से चलती है, ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए अगर आप बैचेस का वेट करोगे तो यू आर गोइंग टू लूज। ओके, तो बैचेस का वेट मत करो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लो ताकि आपके पास जितना भी टाइम है, बिकॉज बैचेस की भी अगर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होंगी तो आपको कोई नुकसान तो है नहीं। ठीक है, तो डोंट वरी एंड आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि कब से होगा और परफेक्ट डेट और टाइम तो मैं नहीं दे सकती, बट जल्द होगा ये ज़रूर बोल सकती हूँ। आप लोगों की कृपा और आप लोगों की
या और आप लोगों के आशीर्वाद से, ठीक है। ओके, सो प्लांटेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, ठीक है। नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, फिल्म शो कर सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। ओके, इज दैट क्लियर? अब सेक्शन ई आ रहा है हमारा। सेक्शन ई के अंदर द क्वेश्चंस आर ऑफ 5 मार्क ईच। ओके, so now we are not having time to go through the questions completely, but I will help you out to read the questions so that you are knowing about the questions. So question number 24 में you have to mention about the Morgan's experiment, ठीक है। मॉर्गन्स का जीन मैपिंग वाला एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बताना है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। देन इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दैट इज सेंट्रल डोगमा, उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारा ये वाला। And the question number 25, it is we have to over here we have to describe the definitions of different types of words like regulator, conformer, migrant, suspend. but ये आप क्वेश्चन skip भी कर दो तो भी चलेगा, because ये chapter number 7 evolution से related है, okay, and that is completely skipped from this year's syllabus. Then the next question, okay, yes, there is a optional question, टॉपिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम, एंड इट्स हमेशा से ये वाला टाइप का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप्स हो गए, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल हो गया, रेजिंग फूड चेन, तो ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन हम 9-10 से लिखते हुए आ रहे हैं, है ना। इट विल बी नॉट वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। so as our time is up, we are not going to have the discussion on it. Go through the questions. If you are having any doubt or any query, you can ask me when I will come live again. Okay, so till then, bye bye everyone. Thank you so much for attending my today's lecture. Make sure you are using the code that is DG007 so that you people are going to have the 10% discount. Thanks ma'am for the wonderful lecture. I thoroughly enjoyed. Thank you so much Rohit for giving me a good compliment. We will meet again very soon. Till then, bye bye everyone.